So okay, fine. Now switch off the light. Now we have a sphere and we have a cube. So modify, freeze, transform, edit, delete by type, history. Now suppose we want K, sphere is the parent object and cube is the child object. Now we have an option in edit, parent and unparent. Now parent and unparent, it's shortcut P, and unparent is shift plus P is a unparent option. Now suppose you want K, sphere is the parent object and cube is the child object. First select the child one, then shift select the parent object, then P from keyboard, yeah, you can do edit, parent, same thing. Now if you select the sphere, the cube is moving along with the sphere, and not only the translation, if you rotate it, then cube will be rotate, even scale also same thing. Watch it carefully, very carefully. And now the complete control of translation, rotation, scale, visibility, now it's controlled by the sphere. Sphere is the parent object and cube is the child object. Now see one thing, कि जब आप sphere को select करते हो, then it's look like कि cube also selected, है ना? Because cube is the child object and sphere is the parent. तभी आपको लगते हैं कि ये भी selected है. And even if you invisible these things, ये भी invisible हो जाएगा. Clear? So this is a kind of conditions. हमें ऐसे माया में, इवन प्रोडक्शंस में, थ्रू आउट द एनिमेशन, ये गेमिंग जिसमें बोला, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस होगा. यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ कनेक्शंस. क्लियर? ऑलवेज सिलेक्ट फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट. क्लियर? पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद पेरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, देन पी. अगर अनपेरेंट करना है तो सिलेक्ट द क्यूब, द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, शिफ्ट प्लस पी. सी, इट्स नाउ डिस्कनेक्टेड. क्लियर? समझ में आया सबको? Select the child, shift select the parent object, then P. Now see one thing, window, now we have to open the outliner. Now I'm just doing same thing. See the changes happen in outliner. Select the child object, shift select the parent object, then P. Now जब हम लोग parent करते हैं, always child object, it will be group under parent object. See the changes. दिख रहे changes सबको? जैसे मैं क्यूब को चाइल्ड बनाया स्पेयर का, ऑटोमेटिकली इसके अंदर हायरार्की में आ गया लाइक चाइल्ड ऑब्जेक्ट. सो इसको अगर आपको अनपेरेंट करना है, नाउ दिस इज द ऑल्टरनेट ऑप्शन. इसको अगर अनपेरेंट करना है, सिलेक्ट द क्यूब, मिडिल माउस बटन से इसको बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, देन इट विल बी अनपेरेंट. इज द ऑल्टरनेट ऑप्शन. Clear? Great. So now animation rollout. Constraint. The first option is point constant. Now open the settings
option box, edit, reset settings. Always, it's a very good practice, reset settings. Now if you check on the point constant editor, first maintain offset. Now maintain offset, exactly, it's normally, for example this situation like here the sphere and cube. अब इस क्यूब से लेके स्फीयर का जितना डिस्टेंस है, ऑलवेज आप चाहते हो कि द डिस्टेंस ऑलवेज शुड बी मेंटेन, तो मेंटेन ऑफसेट उस पर्पस के लिए यूज होते हैं. तो ऑब्वियसली ऑलवेज यूज हैव टू मेंटेन ऑफसेट. सो क्लिक चेक हियर. नाउ मिनिमाइज दिस वन. नाउ पॉइंट कांस्टेंट, वी नॉर्मली यूज पॉइंट कांस्टेंट फॉर ट्रांसलेशन कनेक्शन. मतलब एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशन को कनेक्ट करने के लिए पॉइंट कांस्टेंट यूज करते हैं ऑलवेज. सो now the selection order will be different. First you have to select the parent object, then the child object. Exactly opposite selection order of parent child relation. parent child में पहले हम लोग child को select कर रहे थे, then parent को, and इसमें parent को पहले और child को बाद में. ध्यान रखने की चीज, complete opposite होते हैं इसमें. Now select the parent object, then shift select the child one, maintain offset and apply. Now if you apply these things, now select the parent object, translate, so it's translating, and rotate करो, rotation हो नहीं रहा है इसमें. even scale करो, scale is not connected also, only translation. So this is a point constant. क्लियर. नाउ पॉइंट कांस्टेंट के साथ माया पेरेंट चाइल्ड का और एक रिलेशन है एंड और एक डिफरेंस है बेसिकली. नाउ रिमेंबर कि जब मैं पेरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा था पॉइंट पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन में, उसके साथ साथ चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी सिलेक्शन मोड में दिखा रहा था. बट यहाँ पर देखो, इट्स लुक लाइक ए डिफरेंट कलर, इन पर्पल कलर है ना, पर्पल कलर दिख रहा है इसमें. दैट मीन्स के ये चीज मेंशन कर रहे माया कि दिस क्यूब हैज ए सम रिलेशंस विद दिस पेयर. जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर, इट्स लुक पर्पल बॉर्डर. ध्यान रखना इन माया, अगर आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हो एंड बाय द सिलेक्शन देन सम अदर थिंग इज लुक पर्पल कलर, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट हैज ए रिलेशन विद योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. तो इट्स ए कलर कोड ऑफ माया. ध्यान रखना इस चीज को, बहुत अच्छी तरह याद रखना. किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से कुछ और ऑब्जेक्ट अगर पर्पल कलर दिखा रहे, दैट मीन्स कि उसके साथ कुछ ना कुछ समहाउ कहीं भी रिलेशन है. सो बी केयरफुल, सावधान हो जाओ और सोच समझ के हिस्ट्री डिलीट करो, चेक कर लो क्या कनेक्शन है उसके साथ, फिर उसके बाद हिस्ट्री डिलीट करना. क्लियर. सो नाउ इफ यू सिलेक्ट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद देखो कि ट्रांसलेशन के जो इसके XYZ है ये स्काई ब्लू कलर में ब्लॉक है. आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो. दैट मीन्स कि नाउ इस क्यूब के ट्रांसलेशन इज कंट्रोलिंग बाय द स्फीयर. बाकी जो इसके रोटेट स्केल विजिबिलिटी जो है वो अनब्लॉक है, उसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज अ पॉइंट कांस्टेंट. क्लियर. नाउ इफ यू चेक ऑन आउटलाइनर, ओके, नाउ दिस इज द चाइल्ड ऑब्जेक्ट. नाउ चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक क्रिएट हुए हैं, some different exclamatory sign is node is automatically generated in the child object. तो बेसिकली ये जो नोड है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी को अगर कॉन्स्टेंट्स करते हैं तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर ये नोड जनरेट होते हैं उसमें. इस नोड को अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, ऑफसेट XYZ, एंड नीचे सबसे लास्ट में जो चैनल एट्रीब्यूट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप इस 1 को 0 कर दोगे, देन कॉन्स्टेंट्स तो है यहाँ पर बट वो टेम्पोररी इनएक्टिव हो जाएगा, इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग. दोबारा इसको सिलेक्ट करो, देन इसको 1 कर दो, नाउ इट्स अगेन एक्टिवेटेड. सो इन फ्यूचर we'll do lot of connections and we'll use this facility for different connections. So अभी के लिए इतना जान के रखो constants. Now similar way के like point constant. हाँ, suppose you want to delete the connections. Now what is the process? The best way के select the node, this constants node, and just delete it. या alternate options.
select the child object and select the translation and right click, break connection. Now constants तो break हो जाएगा यहाँ से, the problem के node यहाँ पर रह जाएगा. तो बी केयरफुल, अगर ऐसे आप डिलीट कर रहे हो तो इस नोड को ध्यान से डिलीट कर देना, अदरवाइज डजन्स ऑफ नोड्स ऐसे फालतू के नोड फाइल में पड़ा रह जाएगा, फिर जाके आप ऑप्टिमाइज सिंथेसाइज करोगे आगे जाके. बेस्ट वे है, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट कर लो नोड को, अपने आप ब्रेक हो जाएगा. समझ में आया पॉइंट कांस्टेंट? नाउ सिमिलरली फॉर rotations we have a orient constant. Now select the parent object, then shift select the child object, constant, orient constant. Open the option box, edit, reset settings, maintain offset, add. Now if you select the sphere and if you translate, it's not moving, but if you rotate these things, this cube is rotating along with the sphere. This is a orient constant. सेम प्रोसेस, जब कांस्टेंट करोगे उसके अंदर एक नोड जनरेट होगा, ऑलवेज ये नोड जनरेट होगा चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, पेरेंट के अंदर नहीं. इसको अगर डिलीट करोगे तो ओरिएंट कांस्टेंट ब्रेक हो जाएगा उसमें. सेम प्रोसेस पॉइंट कांस्टेंट के साथ जो है. डिफरेंस ये है कि इस बार ओरिएंटेशन के साथ कनेक्टेड है, पिछली बार ट्रांसलेशन के साथ कनेक्टेड था. क्लियर? नाउ द थर्ड ऑप्शन इज scale constant. Again select the parent object and shift select the child one, constant, scale constant. Now translation and rotation is locked, only scale is connected. Clear? समझ में आया सबको? गुड. नाउ वी नो पॉइंट कांस्टेंट, ओरिएंट कांस्टेंट and scale constant. Aim constant I will show it in the future. Now parent constant. Now if you open the option box, you will get translation and rotation, both the option. Now basically parent constant is the combination of orientation, orient constant and point constant. Suppose you want to do connect translation and rotation, both the options, you can use the parent constant option. Select the parent object, shift select the child object, reset settings, then add. Now scale actually is not happening because scale is not connected, but this cube is maintained a distance because we are using maintain offset. Rotate करो, rotation है, even if you translate it you will get the translation. Now select the child object. आपके पास translation rotation जो दो ब्लॉक है, only scale and visibility is unblocked. So आप इसके ऊपर दूसरा कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, स्केल कांस्टेंट. सो अगेन सिलेक्ट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द चाइल्ड, scale constant. Now we have a two constant node because we use one parent constant and other scale constant. Now if you select the child object, translation, rotation, scale, all the thing is blocked. Clear? Just a minute. Helpline, display, command line. Now one thing is very important. I already told you कि एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकता, एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है. ऑपोजिट. सपोज दिस इज ए चाइल्ड ऑफ दिस स्फीयर. नाउ आप बोल रहे हो कि let's use another one constant. So select this sphere and shift select the child one, point constant, add. जैसे आप add बटन प्रेस करते हो
my will generate a error message. Is it visible? क्या लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को? Already connected. Exactly, the object is already connected. मतलब इसमें ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, दोबारा नहीं लग सकते हैं उसमें. तो वही मैं आप लोगों को बोल रहे थे कि अगर इसमें कोई कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, आप दूसरे कॉन्स्टेंट्स यूज नहीं कर सकते. सपोज द प्रीवियस एग्जाम्पल, you already applied a parent constants, that means translation and rotation is connected. Now scale was vacant, so that is the reason I used scale constant. It's done. But again, if you are using point constant, then it's showing some error message, because parent constant is a combination of point and orient constants. That is the reason. Now check another one interesting thing. So we are applying point constant, na? Close it. Now select the child object, select the child one and just select the translation, right click, break connection. Now we break the connection of translation. Now again select the child parent one, then child. Now do again the point constant. Now it's happened. क्योंकि मैं ब्रेक कर दिया था उसको ट्रांसलेशन. एक कांस्टेंट इसलिए अप्लाई नहीं करने दे रहा था आपको क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉक था, इसीलिए. क्लियर? समझ में आया सबको? The constants node. Now window, general editors, connection editor. Now if you open the connection editor, it's look like a channel box kind of thing. So actually it's a reflection of channel box. Now if you check properly कि आपको दो ऑप्शन है, फर्स्ट reload left and reload right, and if you check on the below side it's outputs and input, means the parent object it should be always left side. So select the sphere, reload left, and select the cube, reload right, because sphere is the parent object, cube is the child object. Now options, left display, right display, health, we have a 4 button here. Now if you open the left display, यहाँ पर एक ऑप्शन है शो नॉन कीएबल. नॉन कीएबल मीन्स ऐसे ही अभी आपको बताया कि यहाँ पे these are 10 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है. इस एट्रीब्यूट को छोड़ के और भी बहुत सारे हंड्रेड्स के ऊपर एट्रीब्यूट्स हैं. उस एट्रीब्यूट को अगर आपको देखना है तो जस्ट शो नॉन कीएबल को चेक कर दो, तुरंत देखो यहाँ पर कितने सारे एट्रीब्यूट आ गए अचानक. ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पर भी हैं बट वो हाइड हैं. तो मैं आपको इसीलिए ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि समटाइम्स हो सकते हैं आप जैसे लोड करोगे आपको इतने सारे एट्रीब्यूट दिखें, तो अब कंफ्यूज मत हो जाना. जस्ट लेफ्ट डिस्प्ले में जाके ये आपको चेक मिलेगा, उसको अनचेक कर देना. सिमिलरली राइट के लिए भी कभी अगर आप ऐसा फेस करो प्रॉब्लम तो उसको अनचेक कर देना. तुरंत जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट जो यहाँ पर चैनल बॉक्स में मिलते हैं आपको, सेम एट्रीब्यूट आपको यू विल गेट इन लेफ्ट एंड राइट. नाउ इट्स टाइम फॉर कनेक्शन. सो suppose I want to connect the translate with rotate Z and translate Z with scale Y and rotate Y with translate X. स्केल के साथ विजिबिलिटी कनेक्ट कर देता हूँ. कूल, मिनिमाइज कर दो ना सीधा. ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल. मैंने कुछ लॉजिकल कनेक्ट नहीं किया, जस्ट किसी के साथ किसी को भी कनेक्ट कर दिया मैंने. सो दिस इज द वे, एनीथिंग इज पॉसिबल.
यस कौन है? The new students. Govind sir. नाउ समझ में आया आपको Yes, sir. कनेक्शन राइटर को कैसे यूज करना है? If you check the child object's attributes, it's showing some yellow color. It's yellow color. That means these channel attributes is blocked by this parent object. इसीलिए वो येलो कलर दिख रहे हैं आपको. यहाँ पर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. अगर करना है तो इसी के थ्रू, पेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू करना पड़ेगा.